Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will see one more question of integration, okay, by the substitution method. Yes. So हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे. The question given to you is integration of 1 upon x square plus 2x plus 2 of dx. ये आपको सॉल्व करना है. ओके. यहाँ कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में. ये आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, इतना इजी प्रॉब्लम तो नहीं है. आपका ये स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, किस तरह हम करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम गिवन टू अस इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2. यू कैन सी दिस वन. मैं आपको हिंट देता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. बचपन में आपने क्या होगा, एक मेथड कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर लो, उसको ब्रेक आप 2 को. यस, ये पार्ट क्या बनेगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. यस और नो. एंड प्लस एक 1 जो बचा हुआ है उसको प्लस 1 लिख दो. आई होप आपको समझ में आया जो मैंने कहा आपको यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड दी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. यस और नो. तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. यस, ब्रैकेट द होल पावर 2. यस, दिस इज द प्रॉब्लम. सिंप्लीफाई कर दिया गया. नाउ यू कैन चेक दिस आउट. This is of the form which I gave you in my last class of integration, the lecture number 12. Whenever you find this kind of problem of x square plus a square, you just need to think in mind that of trigonometry formulas. We know one trigonometry formula is that tangent square. What we know, it is tangent square theta plus 1 gives you what? Gives you secant square theta. Yes or no? You know this formula from class 10 also. क्लास 10 से हम जानते हैं इस फॉर्मूला को. क्लास 10 क्लास 11 you have already learned. Not class class 10 class 11 you have already learned. तो आपने पहले से पढ़ा हुआ चीज. तो what you can see, this is x square variable part, here 10 square is the variable part and a is the number, so that 1 is also a number. So something ये जो हमारा जो a square plus a square है, this similar it is similar to tangent square x plus 1 equal to secant square x और थीटा, जो भी आप एंगल ले लो आप. ठीक है, चलो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन. आपको हिंट मिल गया होगा. वी विल सब्स्टिट्यूट दिस x प्लस 1. हमें पूरा का पूरा ये पार्ट को x स्क्वायर पार्ट को पूरा का पूरा बनाना है. एंड यू कैन सी हियर द वेरिएबल पार्ट हियर इज व्हाट, 1 स्क्वायर. यू कैन राइट 1 स्क्वायर. यस, इट इज 1 स्क्वायर. सो इस बार हम क्या लेंगे, इसमें आपको पता होता है इसमें हम क्या लेते हैं, a x बराबर a tan थीटा और cot थीटा. यू कैन गो फॉर cot थीटा आल्सो, यू कैन गो फॉर tan थीटा आल्सो, बट a लेते हैं वहां पर when that is a square, but this time this is 1 square, so the value for a will be 1. yes, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, x plus 1 will be what, you will take 1 into, let me take tan theta. okay, मुझे tan theta पसंद है, मैं tan theta ले रहा हूँ आपका. okay, this is 1 into tan theta, that is tan theta, simply tan theta. Now you just need to find the differential. okay, take the differential of both sides. The differential of x plus 1 will be dx, simply because differentiation of x is 1 into dx and 1 is 0, just leave it out 1 0 that one. And what is the differentiation of tangent of x? It is secant square x, secant square theta, not x. I'm taking as new variable theta. So secant square theta d theta. Yes, this is called a differential. तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ से प्रॉब्लम क्या बन गया आपका, देखो ध्यान से. प्रॉब्लम बन गया आपका 1 अपॉन ब्रैकेट में क्या है आपका, x प्लस 1 तो आपने लिख दिया क्या, tan थीटा, एंड दैट इज स्क्वायर. सो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल ब्रैकेट, all to the whole bracket square. yes, and dx, what is dx? dx is secant of square theta d theta. yes, बहुत easily प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. देखो, now you can see in the denominator that it is written was tan square theta plus 1, that is what, secant square theta. इसलिए हमने ऐसा बनाया था, it is secant square theta whole square. yes, into it is secant square d theta. yes, I hope समझ में आ रहा है आपको प्रॉब्लम. इसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, now you can expand this out, this will become secant of 4 theta into secant square theta. you can check this out. एक secant square theta कट जाएगा आपका क्या बनेगा रिमेनिंग, आपका रिमेनिंग बनेगा 1 अपॉन secant square theta. yes, ये बनेगा d theta. I hope आपको समझ में आया ये प्रॉब्लम. इसके बाद क्या करना है आपको, it is 1 upon, so you just need to take the reciprocal of secant, it is cos square theta d theta. अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. now you know one formula of trigonometry, that is 1 plus cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta.
हमें cos स्क्वायर यहाँ दिया गया हुआ है, तो इसको we will express cos स्क्वायर थीटा in terms of 1 plus cos 2 थीटा divide by 2. yes, हम ये लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, it will be cos square will become 1 plus cos sine of 2 angle theta divided by 2. yes, ये मेरा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया आपका और इजीली सॉल्व हो जाएगा. नाउ यू जस्ट नीड टू टेक दिस हाफ आउटसाइड. ओके, ये 1/2 आपका आउट हो जाएगा. इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 का प्लस cos sine of 2 theta. now the question becomes so easy. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बनेगा आपका इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्या बनेगा. now integration of 1 in terms of theta is theta plus what is the integration of cos 2 theta. The integration of cos function is sine function. yes, it is sine whatever the angle is divided by the angle is 2 theta. you just need to divide by the coefficient of that angle, that is 2. okay, and the whole bracket. ठीक है, half आपका कॉमन था इसलिए, and plus c a constant of integration. you just need to multiply this half if you want to multiply. so answer will become theta upon 2 plus it is sine of 2 theta divided by 2 are 4 plus c. now you just need to do what, you just need to back substitute the value of theta. what was theta? First of all, you remember we considered that tan theta as x plus 1. so it was tan theta equal to x plus 1. so you tell me what is theta from here. Theta is nothing but it is tan inverse x plus 1. yes or no? I hope आपको समझ में आता हो. theta is what? theta is tan inverse of x plus 1. yes or no? theta is nothing but it is tan inverse x plus 1. yes, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको आगे. तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाता है यहाँ पर. इन प्लेस ऑफ थीटा यू कैन राइट tan जेंट इनवर्स x plus 1 होल डिवाइड बाय 2. but what about this sin 2 theta? क्या करें इसके साथ. let's write sin 2 theta as sin 2 okay, let me add sin 2 theta for time in. आप देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको अभी सॉल्व नहीं हुआ है. ओके, बिकॉज वी हैव टू रिमूव दिस थीटा. थीटा एक पैरामीटर जो हमने डिफाइन किया अपने तरफ से, बट वी हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ x ओनली. जो इनिशियल द एग्जामिनर वांट्स अस टू गिव द आंसर. ओके, एग्जामिनर ने x लिया था, तो हमें भी आंसर में x होना चाहिए, बट वी हैव कंसीडर वन पैरामीटर थीटा. सो वी नीड टू री एक्सप्रेस द थीटा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या माना, tan थीटा माना था हमने, क्या x plus 1. इफ यू रिमेंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यू नो दैट tan थीटा आपने माना क्या था. just suppose this is angle theta, this is 90. okay, what is tan theta? it is perpendicular upon base. okay, it is what, x plus 1 upon 1. yes, you can take 1 as in the denominator. we know that there is 1. so आपका perpendicular you can consider as the perpendicular as x plus 1 in terms of theta, and this base as 1. so you just need to find this hypotenuse with the help of Pythagoras theorem. it will be what, it will be x plus 1 whole square plus 1 square. yes, this is the Pythagoras theorem. तो इसको आप सॉल्व करो तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, इफ यू सॉल्व दिस x plus 1 will be x square plus 2x plus 1 square 1, and this will be the plus 1. so it will become what, x square plus 2x plus 2. so you got this one, yes or no, it as a hypotenuse. so tell me according to this. okay, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, what will be sin theta. it will be perpendicular upon hypotenuse, that is it is x square plus 2x plus 2. yes, and what will be cos theta? it will be base. what is base? 1 upon it is square root of x square plus 2x plus 2. yes, ये बनेगा. I think you got the point what we are going here, what we are doing here. the sin 2 theta, now sin 2 theta को मैं एक्सप्रेस करूंगा in terms of sin theta 2 sin theta into cos theta. समझ में आ गया आपको बात. देखो समझो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन आया हुआ है, solution is what, tangent or inverse of x plus 1. ये solution तो ठीक है, because we have expressed in terms of x, but there is a problem with what, this part. it is plus 1/4. yes, plus 1/4 of it is sin 2 theta. we will write 2 sin of theta into cosine theta. yes, इसमें क्या होगा आपका, ये 2 से कट जाएगा, ये हाफ बन जाएगा ये भी. so now you can do what, you can write as 10. okay, what you can do, one thing, you can take this हाफ एस कॉन. ओके ओके, मैंने प्लस सी में भूल गया. ओके, प्लस सी आप लिख लेना. ओके, नो प्रॉब्लम विथ फॉर दैट, प्लस सी आप भूलना नहीं. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई एम टेकिंग हाफ एस कॉमन, द आंसर इज tan इनवर्स x plus 1. ठीक है, ये पार्ट का आंसर सही है. प्लस व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा इज नथिंग बट x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ plus 2x plus 2 into, yes, cos theta is what is cos theta? 1 upon square root of x square plus 2x plus 2. yes,
This is the solution plus c. Now you just need to do the product आपका solution आपके पास. So half it is tangent inverse of x plus 1 and plus x plus 1 into 1 is x plus 1 all divided by what is square root of something into square root of that something. स्क्वायर रूट में वैल्यू सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, स्क्वायर कट जाएगा आपका, आंसर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट. एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम ऑफ द डे. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.